Assalamu alaikum, dear student of class 6. Today our topic is lesson 2nd. Today we are going to read lesson 2nd. So let's begin our lesson now. I hope that everybody is ready to start. I will read lesson 2nd with meaning, and some difficult words I will repeat again and again, so please listen carefully. Now, lesson 2nd, stories from Aesop. Stories from Aesop. कहानियों एसोप का. Aesop pronounced Aesop. Page number 8 बेटा. Aesop pronounced Aesop. Lived in Greece many hundreds of years ago. Lived, second form of verb. Lived, first form, and lived second and third form. Now in this sentence, lived in a second form of verb. Aesop lived in Greece many years, many hundred of years ago. Aesop रहियो यूनान में 100 साल पहिरियां अॻु. He was the servant of a rich man. He was the servant of a rich man. Servant means मुलाजिम, खादिम. Rich means अमीर. Rich means अमीर. He was is a helping verb of past continuous tense. I will tell you orally. He was is a helping verb of past continuous tense. So he was the servant of a rich man. Here मुलाजिम हो एक अमीर मान हो जो man 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 only one man. He was the servant of a rich man. He मुलाजिम हो अमीर मान हो जो. He was clever. Clever means चालाक. Clever is the adjective. Why? Because clever qualify the meaning of pronoun he. He was clever at making up stories and telling them to his friends. He was clever, हू चालाक हो, at making up stories, कहानियूं ठाहिण में, and telling them, उन्हनि खे ॿुधाइण में, to his friends, पंहिंजे दोस्तनि खे. Means Aesop was a servant of rich man. He was clever at making up stories and telling them to his friends. Aesop 100 साल पहिरियों रहियो यूनान में. ग्रीस यूनान name of country. He was clever at making up stories and telling them in his friends. ऐं चालाक हो कहानियूं ठाहिण में ऐं पंहिंजनि दोस्तनि खे ये ॿुधाइण में. Everybody liked hearing the stories. He told. हर हिकु पसंदि कंदो ॿुधणु कहानियूं. He told. हिन ॿुधायूं. Mothers and fathers. Mother means मां, वालिदा, and father means वालिद. Mothers मायरूं and fathers pair told them to their children. पंहिंजनि ॿारनि खे ॿुधायूं. Children ॿार जम more than one or two and a singular child. Travelers means सफ़र कंदड़, मुसाफ़िर. Travelers heard the stories in Greece. सफ़र कंदड़नि ॿुधियूं कहाणियूं यूनान में. And told them ॿुधायूं उन्हनि खे in other countries, ॿियनि मुल्कनि में. Aesop became famous. Famous means मशहूर. Aesop became famous all over the world. World means पूरी दुनिया. Aesop became famous all over the world. Aesop मशहूर थियो पूरी दुनिया में. And his stories are हुन जूं कहाणियूं are still told today.
अॼु ताईं ॿुधायूं वयूं आहिनि. Here is one of them. हिते उन्हनि मां हिकु आहे. Now beta some difficult words I will repeat again. Lived means रहियो. Lived means रहियो. Now I will write some difficult words on the board. Stories from Aesop. Okay, now I will write some difficult words on the board. Word and its meaning. Okay, now first word, lived. रहियो. Okay, now Greece. Okay, Greece means Yunnan. Yunnan. Many केतिराई 100 years साल servant. मुलाजिम. Now rich. अमीर. Travelers. मुसाफिर. Okay, right. And countries is a plural. मुल्क. Right. Famous. मशहूर. Okay, now all over the world. दुनिया. Right. Today. Okay, now the man who tried to please everybody. The man माण्हू who जेको tried कोशिश कई. Second form of verb, first form of verb to try means कोशिश करण and tried means कोशिश कई. To please everybody. To please means खुश करण. Everybody हर एक खे. The man who tried to please everybody. माण्हू जे हर हिक खे खुश करण जी कोशिश कई. One fine morning. हिक ख़ूबसूरत हिक उम्दा सुबुह जो. The farmer means hari. Farmer means hari. Now work on the fields. One fine morning, हिक उम्दा हिक ख़ूबसूरत सुबुह जो a farmer हिक हारी went to town. शहर ॾांहुं वियो या इलाइक़े ॾांहुं. टाउन माना उहा आबादी जंहिंजे इर्द गिर्द चौधारी फसल हुजनि, खेत हुजनि. Now a farmer went to town to sell his donkey. To sell means विकिरो करणु, खपणु. हिकु हारी इलाइक़े ॾांहुं या शहर ॾांहुं वियो. To sell his donkey, पंहिंजे गॾ खे खपाइण. Donkey means गॾ.
His son went with him. हिन जो पुटु हुन सां गॾु वियो. With means सां गॾु. The farmer led the donkey. Lead means अॻुवाणी कई. Lead means अॻुवाणी कई. The farmer led the donkey. हारीअ गॾह जी अॻुवाणी कई. And his son ऐं हुन जो पुटु walked beside him. हलियो हुन जे भरिसां हुन जे पासे में या हुन जे भर में. The sang उन्हनि they sang they उहे. They sang उन्हनि गायो. Sang is also verb and a second form of verb. First form of verb sing and second form of sang. They sang as they walked along. उन्हनि गायो जीअं उहे हलिया गॾोगॾु. The farmer and his son हारी ऐं हुन जो पुटु passed some girls. कुझु छोकिरियुनि वटां गुज़रिया. On the road. रोड ते रस्ते ते. The girls began to laugh at them. छोकिरियुनि उन्हनि ते खिलणु शुरू कयो. To laugh means खिलणु. Began second form of verb begin. The girls began to laugh at them. छोकिरियुनि उन्हनि ते खिलणु शुरू कयो. Okay. What's wrong with your donkey? तव्हांजे गॾ सां छा मसइलो आहे? छा थियो आहे? Asked the girls. छोकिरियुनि पुछियो. Now nothing. कुझु बि न. Nothing means कुझु बि नहीं. कुझु बि न. Replied the farmer. हारीअ जवाबु ॾिनो. I am going to sell him. मां हिन खे खपाइण लाइ वञी रहियो आहियां. In town इलाइक़े ॾांहुं शहर ॾांहुं for a lot of money. घणनि पैसनि लाइ. You are silly to walk all the way. छा तव्हां बेवकूफ़ आहियो जो वञी रहिया आहियो हिन रस्ते ते या इहो करणु. Said the girls. छोकिरियुनि चयो. Let your little boy ride. तव्हांजो नंढड़ो छोकिरो हली रहियो आहे, पंधु करे रहियो आहे, सवारी करे रहियो आहे. The farmer wanted to please the girls. हारीअ छोकिरियुनि खे ख़ुशि करण जी कोशिशि कई. मीन्स गर्ल्स उन्हनि खे चयो त तव्हां मतिलबु गॾु तव्हां बि हली रहिया आहियो ऐं तव्हां पंहिंजे नंढड़े पुट खे पंधु कराए रहिया आहियो त उन ते खिली रहियूं. हारीअ छा कयो? उनखे ख़ुशि करण लाइ छा थो करे? The farmer wanted to please the girls. हारीअ छोकिरियुनि खे ख़ुशि करणु चाहियो. Wanted means चाहियो. He lifted his son on the donkey. He lifted his son on the donkey. हिन पंहिंजे पुट खे गॾ ते वेहारियो या खयो. And walked on beside them. ऐं पाण हलियो हुननि जे भरिसां या गॾोगॾु. Further तमामु परे along the road रस्ते ते गॾोगॾु the farmer and his son meet an old man. हारी ऐं हुन जो पुटु मिलिया हिकु पोड़े माण्हूअ सां. The old man shook his stick at the boy. The old man shook his stick at the boy. पोड़े माण्हूअ लकड़ छोकिरे जे पुठीअ ते रखियो या हयो. What a selfish boy. Selfish means ख़ुदगर्ज़. ख़ुदगर्ज़ means पंहिंजो सिर्फ़ु पंहिंजो सोचण सां ख़ुदगर्ज़ उनखे चवंदा जेको सिर्फ़ु पंहिंजो सोचींदो आहे. चए थो The old man shook his stick at the boy. पोड़े माण्हूअ पंहिंजो स्टिक पंहिंजी लकड़ी छोकिरे ते रखी या उनखे हई लुॾाई. What a selfish boy. केॾा न ख़ुदगर्ज़ छोकिरा आहियो. You are. तव्हां आहियो. He cried. हिन रड़ कई. Riding the donkey while your poor father walks. तव्हां गॾ ते सवारी करे रहिया आहियो ऐं तव्हांजो पोड़ो पीउ पंधु हले थो. Okay. To please the old man. पोड़े माण्हू खे ख़ुशि करण लाइ. The farmer हारी lifted down his son. पंहिंजे पुट खे गॾ तां लाथो. And got on the donkey himself. ऐं गॾ ते पंहिंजो पाण वेठो. Okay. As जीअं त they went on their way. जीअं त उहे हलिया साॻे तरीक़े सां साॻे रस्ते सां. The farmer and his son. हारी ऐं हुन जो पुटु meet some women. मिलिया कुझु औरतुनि सां. Women in this line is plural. And children ऐं ॿारनि सां. One of the women
pointed to the farmer. औरतुनि मां हिकु औरत इशारो कयो केॾां हारीअ ॾांहुं. Look at the lazy man. ॾिसो सुस्त माण्हू ॾांहुं. lazy means सुस्त. She said. हुन चयो. He rides the donkey. हीउ गॾ ते सवारी करे थो. And makes his poor little boy walk. ऐं पंहिंजे नंढड़े पुट खे पंधु हलाए थो, पंधु वठी वञे थो. To please the woman. औरत खे ख़ुशि करण लाइ. The farmer and his son. The farmer helped his son. हारीअ पंहिंजे पुट जी मदद कई to get up behind him. पंहिंजे पोयां विहारियो. The farmer and his son rode along together on the donkey. हारी ऐं उन जे पुट गॾ ते सवारी कई या वेठा. They passed some women. Sorry, not a woman, men. They passed some men. उहे गुज़रिया कुझु माण्हुनि वटां. Is that your donkey? शाही तव्हांजो गॾो आहे. The man asked. माण्हुनि पुछियो. You will kill him. तव्हां हिन खे मारींदव. If you make him carry a heavy man and a boy. जेकॾहिं तव्हां हिन ते हिकु वज़नी माण्हू ऐं छोकिरो विहारियो था. Why don't you carry the poor donkey? छो तव्हां खयो आहे वेचारे गॾ ते वज़न. The farmer Hari wanted to please the man. माण्हुनि खे ख़ुशि करणु चाहियो. He and his son. ही ऐं हुन जो पुट got off the donkey. गॾ तां लथा. They tied his legs. उन्हनि ॿधियूं हुन जूं टंगूं together पाण में and slung him on a pole. ऐं लटकायूं हिकु लकड़ी या थंबे सां. ॿधियूं थंबे ते. The poor donkey ग़रीब गॾ struggled. सख़्त कोशिशि कई. वेचारे गॾ तमामु घणी कोशिशि कई. एंड किक्ड ऐं लतूं हयूं रुशो पुछियो. The farmer Hari and his son ऐं हुन जो पुट put the ends of the pole on their shoulders. पोल जा उन थंबे जा उन लठ जा छेड़ा आख़िरी हिसा पंहिंजनि कुलनि ते रखिया. They walked into the town ऐं हलिया शहर ॾांहुं इलाइक़े जी तरफ़. Carrying the donkey गॾ खे खणंदे. The people in the town. माण्हू इलाइक़े में ॻोठ में laughed to see a man. खिलिया माण्हूअ खे ॾिसंदे. And the boy ऐं छोकिरे खे carrying struggle donkey. खणंदे हिकु माना सख़्तु कोई लुछण पुछण वारे गॾ खे. They ran along beside the farmer. उहे हलिया गॾो हारीअ सां. And his son ऐं हुन जे पुट सां. Laughing and shouting. खिलंदे ऐं रड़ियूं कंदे. The poor donkey was frightened. वेचारो गॾो तमामु ख़ौफ़ज़दा हुओ. वेचारो गॾो ख़ौफ़ज़दा हुओ. The farmer Hari and his son ऐं हुन जो पुट were tired and hot. हारी ऐं हुन जो पुट तमामु घणो थकिजी पिया ऐं गर्मी महसूसु कई. They put down the donkey. उन्हनि गॾ खे हेठि रखियो. The beast kicked himself free. जानवर लतूं हणी पंहिंजो पाण खे लुछे पुछे पंहिंजो पाण खे आज़ादु कयो. And galloped away. ऐं तिखो तेज़ तमामु परे भॻो. He fell into the river. ही किरी पियो दरिया में नदीअ में. And was drowned. ऐं बुॾी वियो हो. The farmer went home sadly. हारी घर ॾांहुं वियो उदासीअ सां. I tried to please everybody. मां हर हिक खे ख़ुशि करण जी कोशिशि कई. He said. हिन चयो to his friend पंहिंजे पुट खे. But I have pleased nobody. पर मां कंहिंखे बि ख़ुशि न कयो आहे. And I have lost my donkey. ऐं मां पंहिंजो गॾु विञाए वेठो आहियां. बेटा listen. In this story we have learned good lesson. Which lesson? पुट मीन्स ॿियनि खे ख़ुशि करण लाइ तव्हां अहिड़ो बि न कयो जो पंहिंजो लॉस करे वियो. हमेशह उहा शइ कयो जंहिंमें तव्हांखे बि बेनिफिट मिले पर तव्हां सां गॾोगॾु
ॿिया बि उन शइ मां बेनिफिट वठनि ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशी मिले। ईअं न आहे त सिर्फ़ु असां उहो कयूं जंहिंसां सिर्फ़ु असांखे ख़ुशी मिले, असां हैप्पी थियूं, पर असां ॿियनि खे सैड कयूं। सो नाउ चए थो द फार्मर वेंट होम सैडली, हारी घर ॾांहुं वियो उदासीअ सां। आई ट्राई टू प्लीज़ एवरीबॉडी, मां हर हिकु माण्हूअ खे ख़ुशि करण जी कोशिशि कई। ही सेड टू हिज सन, हिन पंहिंजे पुट खे चयो, पर आई हैव प्लीज़ नो बॉडी, पर मां कंहिंखे बि ख़ुशि न कयो आहे। एंड आई हैव लॉस्ट माई डोंकी, ऐं मां पंहिंजो गॾु विञाए चुको आहियां। सो नाउ आई विल राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग ऑन दी बोर्ड। ट्राइड, कोशिश कई। टू प्लीज़, खुश करण। टू सेल, विकिरो करण या खपाइण बेटा। ओके, नाउ डिसाइड, भर में या पासे में। नाउ along, गडोगट, right, to laugh, खिलण। ओके, nothing, कुछ भी न। रिप्लाइड, जवाब ॾिनो या वराणियो। ओके, नाउ सिली, बेवकूफ़। तो राइड, सवारी करण। ओके, फर्दर, तमाम परे। ओके, नाउ अदर वर्ड्स। Other words, selfish, खुदगर्ज, खुदगर्ज। Now एस जीअं त बेटा। नाउ हेवी, वजनी, राइट।
Okay. Struggle. सख्त कोशिश कई. Right. Pole. थंभो. शोल्डर्स. कुल्हा. शोल्डर्स बेटा कुल्हा. बीस्ट. जानवर. गेलोब्ड. गेलोब्ड. खोलो. ओके. Now beta, I will write some difficult words on the board, and this is a interesting story. स्टोरी पुट तव्हांखे पहिरियों बि ॿुधाए चुकी आहियां त स्टोरीज़ पुट इंट्रेस्टिंग हूंदियूं आहिनि, मां असांखे सुठा सबक ऐं एडवाइसिस मिलंदियूं आहिनि. जीअं त हिन स्टोरी मां असांखे कहिड़ी एडवाइस मिली, उहा एडवाइस इहा मिली त पुट कंहिंखे बि ख़ुशि करण लाइ अहिड़ो कुझु न कयो जंहिंसां तव्हांखे बि का शइ न बचे, न मिले, उन सां गॾोगॾु ऐं ॿिया बि तव्हां वां मुतमिन न थियनि. लाइफ में ज़िंदगी में पुट अहिड़ो कुझु कयो जंहिंसां तव्हां बि ख़ुशि रहो ऐं तव्हां सां गॾोगॾु तव्हां सां रिलेटेड जेके बि शयूं आहिनि, जेके बि माण्हू आहिनि, उहे बि ख़ुशि रहनि ऐं फ़ाइदो वठनि. ईअं न आहे पुट त ॿियनि खे सिर्फ़ु ॾेखाव लाइ, ॿियनि खे करण लाइ तव्हां उहो करे वियो जंहिंसां तव्हांखे पाण खे बि लॉस मिले ऐं ॿियनि खे बि. सो पुट हमेशह पाण ते बिलीव ऐं अल्लाह पाक जी ज़ात ते बिलीव रखी इहे शयूं कंदा अचो. नाउ today's our lesson finished. I hope that you will understand. Beta, don't you worry, only try to understand. So thank you so much. Inshallah, tomorrow I will see you again. Next topic, next lesson. Thank you. Allah Hafiz.